एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ये आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं और शगुफ्ता अली वोकेशनल विंग सदर में आप सब लोगों को वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग ट्यूटोरियल गो थ्रू कर रहे हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो स्टे कनेक्ट विद मी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सबसे पहले गाइस हम बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सबसे पहली फ़ाइल हमारे पास है HTML की। इसी के साथ हम क्रिएट करते हैं index.css and after that we are going to create here another file. Its name is index.js for the JavaScript. So guys, mostly everyone know the basic structure of HTML, CSS and JavaScript. So यहाँ पर सबसे पहले emit abbreviation ऐड कर लेंगे and then अब यहाँ पर टेस्टिमोनियल स्विचर या स्लाइडर क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आप अक्सर वेबसाइट्स के अंदर देखते होंगे। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर टेस्टिमोनियल स्लाइडर्स। ठीक है जी। जो भी चीज़ें बताती हूँ गाइस वो सिंपल, इजी एंड इफ़ेक्टिव होती हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स पे हम उनको गो थ्रू कर सकते हैं सिंपल इजी क्लिक के साथ। सो गाइस, यहाँ पर हम सिंपल इसका एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें दिखता रहे कि व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर। यहाँ पर हम इसका लाइव व्यू ओपन कर लेते हैं and you can easily understand what we are going to create. So first of all we are working on a body. So here is the body area. So we are going to create here some first of all we should need to create link among them. So यहाँ पर सबसे पहले we are going to create here the link. सबसे पहले हम CSS से create कर देंगे। इसी के साथ साथ relation for style sheet. Now you can close this here. इसी के साथ साथ we are going to create here the JavaScript line. So we are going to open here the script tag and then close this tag. So provide here the source of script. Now you can see we can easily provide the JS file. अच्छा, यहाँ पर हम लोग हमारे पास ऑब्वियसली एक ऑसम फॉन्ट का CDN मैंने बहुत दफ़ा अपने लेक्चर्स के अंदर कॉप अप किया है। सो जो यूज़र्स हैं दे हैव एन आइडिया अबाउट, आई जस्ट कॉपी पेस्ट द लिंक हेयर। आप सिंपल CDN की वेबसाइट से जाके इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। इट्स अ ऑसम लिंक। सो यहाँ पर सबसे पहले गाइस हम बॉडी के एरिया में आते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट सम क्लासेस. सो हियर इज़ आर द बॉडी एरिया एंड देन स्टार्ट वर्किंग. सबसे पहले क्लास हम बनाएंगे टेस्टिमोनियल की. So here is the testimonial class. ठीक है जी, बल्कि मैं इसका नाम टेस्टिमोनियल कंटेनर रख लेती हूँ. अब डिपेंड करता है जितने भी आप बनाना चाहते हैं उतने कंटेनर आप कॉल कर सकते हैं. मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ एंड देन प्रेस एंटर. हियर इज़ द क्लास. ओके जी. इसी के साथ साथ इसी क्लास के अंदर यू कैन क्रिएट हियर अनदर div जिसका नाम हम रख देते हैं प्रोग्रेस बार. Okay, so now we are going to enter here and then create another class. Its name is the progress bar. ठीक है जी. so इस प्रोग्रेस बार से बाहर आ जाए क्योंकि हमने यहाँ पर ऑसम फॉन्ट ले लिए हैं गाइस. तो सिंपल हम यहाँ पर एक क्लास बना देते हैं अगेन FS के नाम से. यहाँ पर आइकन लेते हैं. कोटेशन मार्क चाहिए मुझे जो कि हैं FA लेफ्ट. पहले मैं राइट ले लेती हूँ एंड अगेन इसी के अंदर रहते हुए वी कैन ऐड हियर द अगेन एट्रीब्यूट FA कोटेशन.
ठीक है जी. Then again we are going to outside from this. पहले हमने राइट ले लिए, अब यहाँ पर गाइज हम लेफ़्ट गेट कर लेंगे. तो सिंपल इसी को कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की नीड नहीं होगी. एंड यू कैन सेलेक्ट ऑल एंड देन एंटर हियर एंड देन पेस्ट इट हियर. सो राइट की जगह पर यू कैन टेक हियर द लेफ़्ट एंगल, तो हियर इज़ द लेफ़्ट. ठीक है जी. इसी के साथ यू कैन आउट फ्रॉम दिस यहाँ पर पैराग्राफ डिज़ाइन कर लेंगे, और पैराग्राफ के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द क्लास ऑफ टेस्टिमोनियल. सो यहाँ पर अगेन टेस्टिमोनियल की क्लास आप ओपन कर लेंगे. ठीक है जी. एंड देन यहाँ पर जो भी आप मैसेज राइट डाउन करना चाहते हैं यू कैन राइट इट हेयर. कंटिन्यू आवर लेक्चर. सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू राइट हेयर एनी मैसेजेस. हम यहाँ पर फ़िलहाल लॉरेम एप्सिम का टैग्स गेट कर लेते हैं फॉर द डमी टैग्स. ओके जी. इसी के साथ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर अनदर. सो वी आर गोइंग टू राइट इट हेयर. The another class is a user. You can take some images from it. So here is the image source. We are going to open here the image source. We want to provide here the alter tags. You can. I just write it here the alter tags. And after that, we are going to create here the class. Its name here the user image. So you can write it here. So I just take it here the user images look like that. So here is the user image, and then we are going to close this tag here. Okay, fine. इसी के साथ साथ guys we are going to outside inside the div. इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक क्लास बनाती हूँ यूज़र डिटेल की. So here is the class of user details. इसी के अंदर हम h4 की क्लास ले लेंगे. सो h4 की क्लास का नेम हम रख देते हैं यूज़र नेम. ओके. इसी के साथ साथ इसके अंदर वी आर गोइंग टू राइट इट हियर सम टैग्स लाइक आई जस्ट राइट इट हियर द सारा. Put here the name. Sarah Ahmed. After that we are going to take it here the paragraph class. Its name is the role. If you write here the designation. So here is the marketing. तो यहाँ पर कोई सा भी रोल आप प्रोवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ तक गाइज हमारा HTML का काम फिनिश हो गया है. एंड देन हमने एक पोजीशन सजेस्ट की लाइक इन दिस वे, आप देख सकते हैं. सो इट्स लुक लाइक दैट. अब हम आते हैं गाइज CSS की साइड पे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम वर्किंग लाइक दैट. अब यहाँ पर सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी साइन मार्क करेंगे. हम कुछ यूनिवर्सल सेटिंग्स करनी है. हियर इज़ द बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स. मूव ऑन द नेक्स्ट. सो वर्किंग ऑन द फर्स्ट वी आर वर्किंग ऑन अ बॉडी. बहुत अच्छा सा स्लाइडर बनेगा, यू कैन सी. सो हियर इज़ द बैकग्राउंड कलर. कलर कोड भी दे सकते हैं आप यहाँ पर. इसी के साथ साथ इफ़ यू वांट टू राइट द कलर नेम तो यू कैन ईजिली राइट इट हियर. फॉन्ट में फैमिली में sans serif ऐड कर लेती हूँ. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द डिस्प्ले इज फ्लैग्स.
flex direction, we are going to take here the column. After that, align item centered. Justify content as well as centered. Okay. After that, implement here the height 100 VH. आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द ओवरफ्लो, जो भी हम डिज़ाइन करेंगे मल्टीपल टाइम तो वो उसी के अंदर एक कॉलम के अंदर हिडन हो जाएगा. हियर इज़ द मार्जिन become 0, and after that we are going to implement here the padding. It's gonna be 10 px. Okay ji, move on the next. So here is a testimonial container. So implement here the background color. Here is the color code. इसी तरीके से अगर आप कोई सा भी कलर इम्प्लीमेंट करना चाहते तो आप कर सकते हैं. फ़िलहाल मैं थोड़ा सा इसको डार्क लेना चाह रही हूँ. Now it's look like that. फॉन्ट कलर ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है, हम इसको वाइट कर लेते हैं. Then it's easily appear. Look like that. So implement here the border radius 15 px. After that, implement here the margin is 20. So 20 px. And then auto. So after that we are going to implement here the padding 50 px, then 80 px. After that we are going to implement here the maximum width. It's gonna be 768 px. So after that, implement here the position is relative. So move on the next. So we are going to implement here the effect quotation. सिंपल गाइज, यहाँ पर हम यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर इम्प्लीमेंट कर देंगे, जो कि आप देना चाहें वो दे सकते हैं. वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द RGB कलर. सो हियर इज टैब यूज़ करते हैं फॉर द स्विचिंग अमंग ऑल द कलर्स कोड. तो यहाँ पर ओपेसिटी में हल्की सी अल्फ़ा में लाइट रखूँगी. ओके, आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द फॉन्ट साइज़, जो कि हमारे पास है 28 px. After that we are going to take here the position is absolute, and then we are going to implement here the top is 70 px. So guys, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब हम आते हैं कोटेशन राइट और लेफ़्ट की तरफ. सो दोनों को जो है हमने यहाँ पर, सो यहाँ पर फर्स्ट वन इज़ दी लेफ़्ट है, तो I just write it here. The right is 40 px. इसी के साथ साथ we are going to implement here the right. So right में आप left को implement कर देंगे. Here is again the 40 px. ठीक है जी. After that implement here the testimonial. So here is the line height, हम रख देते हैं 28 px. Okay. After that implement here the text align justify, ताकि वो एक सीक्वेंस के अंदर बन हो जाए. And then implement here the user
So here is the display flags. After that, implement here the line item is center, and justify content you can implement here as well as center. So move on the another class. Here is the user, and then you can make here the user image class as well. So again we are going to implement here the border radius. मुझे राउंडेड में चाहिए तो पिक्चर्स में 50% कर देती हूँ, क्योंकि हमने अभी तक पिक्चर यहाँ पर ली नहीं है तो हम एक रैंडमली पिक्चर का सोर्स बाहर से कैट कर लेंगे. So implement here the height is 75 px. After that we are going to implement here the width as well as 75 px. And after that here is the object fit, obviously cover. So here is the cover. ठीक है जी. इसी के साथ गाइस अब हम आ जाते हैं यूज़र डिटेल्स की क्लास के ऊपर. Here is the user detail class. So implement here the margin left is gonna be 10 px. Fine. इसी के साथ साथ अब हम आ जाते हैं यूज़र नेम पे. Here is another class of name username. So username के अंदर गए सिंपल हम मार्जिन जो है वो 0 कर देते हैं. Fine, let's look like that. Okay, move on the next. User के साथ we are going to create here the role class. Here is the font weighted, normal, and after that put here the margins 10 px and then 0. So move on the progress part. So here is the background color. So here is the white. After that we are going to implement of the progress bar is height 4 px. After that width we are going to take on the 100%. And then animation slightly grow होगी. So animation is grow 10 second, infinite, linear. I think we are going to add here linear infinite. Okay, so move on the next, the transform origin, the left. So guys, we are going to implement here some keyframes. I reloaded this. So here is a preview, look like that. अब सारा जो भी है ना गाइस ये सब एनिमेटेड हमने करना होगा with the help of JavaScript. तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं की फ्रेम्स ऐड कर देती हूँ. मैं थोड़ा सा मैं इसका साइज़ जो है ना वो इस विंडो का श्रिंक कर देती हूँ. So here is the keyframe. कीफ्रेम आइडेंटिफायर के अंदर क्योंकि हमने ऑलरेडी आइडेंटिफायर का नाम ग्रो रख दिया है तो वही देखेंगे. हियर इज द 0%. स्टार्टिंग सबसे पहले ट्रांसफॉर्म स्केल ऑन एक्स एक्सेस 0. आफ्टर दैट implement here the media query. So here is the maximum width. Here is the 7/8, बल्कि हम यहाँ पर 768 स्टैंडर्ड साइज कैट कर लेते हैं ना px के अंदर. So here is
the class of testimonial container. So implement here the padding is 20px then 30px. आप देख सकते हैं जितनी साइज है उसके हवाले से आपका कंटेनर जो है एडजस्ट हो रहा है एफ ए कोटेशन एज वेल एज डिस्प्ले पर आकर हम इसको फिनिश कर देंगे ना। ठीक है गाइस, मूव ऑन द जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द मैसेजेस जो कि आपने डन कराने हैं। सो मूव ऑन द जावास्क्रिप्ट। अच्छा, प्रीव्यू का अब काम नहीं है क्योंकि मैसेजेस ऑब्वियसली रन होने के बाद ही आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं टेस्टिमोनियल container. Here is so document dot query selector सबसे पहले टेस्टिमोनियल कंटेनर की क्लास जो आपने वहाँ बनाई है सेम लाइक दैट यू शुड नीड टू कॉल इट हियर। Move on the next. Testimonials document dot query selector. Here is the testimonials. Move on the next construct. So here is the user image. Some slightly picture भी चेंज होगी, then मैसेज भी चेंज होगा। तो इस तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव सा फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मेरा गला ऑब्वियसली ख़राब है, आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा मेरी। तो here is the user image. After that, here is the name. So again, we are going to get it here. Sorry, user name. After that, we are going to implement last on the list the role. हम यहाँ पर 3 से 4 मैसेजेस राइट डाउन करेंगे, डिपेंड करता है, आप और लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। Here is the document dot query selector. Then here is the role class. जो क्लासेस हमने बनाई थी वो सारी हमने यहाँ पर 1 by 1 कॉल कर ली हैं। सो अब हम कंस्ट्रक्शन पर आते हैं, अनदर कंस्ट्रक्ट करते हैं टेस्टिमोनियल्स। सो रन हियर द array. फर्स्ट वन इज नेम, कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। आई जस्ट राइट इट हियर। Here is the position. Marketing.
sorry, I forget to put here the terminator, and then you should need to write it here the photo. जो भी पिक्चर का सोर्स है गाइस वो आपने यहाँ पर इस कॉमास के अंदर ऐड कर देना, ठीक है जी। इसी के साथ साथ अभी हम लाइव ले लेते हैं इंटरनेट से, तो टैग्स ऐड करना है, सॉरी अगेन पुट हियर द कॉमा एंड देन टैग्स ऐड करना है। सो मैसेज वट एवर यू वांट, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। एंड देन मैसेज के बाद आपका जो क्राइटेरिया है यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। एंड देन फर्दर मोर यहाँ पर सॉरी मैं बना के लेफ्ट कर देती हूँ। ओके, इट्स लुक लाइक दैट। अब जो भी मैसेज होगा कन्वे होगा वो फिर कोटेड के अंदर, सिंगल या डबल कोटेड के अंदर यू कैन अवेयर इट। तो यहाँ पर मैं इसको डबल कोटेड कर देती हूँ, गेट सम मैसेज एंड देन क्लोज। तो ये पहला स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मुझे पिक्चर का सोर्स चाहिए और मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो हम इसको पिक कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर आकर सबसे पहले हम लोग जो हमारा रैंडम इमेज थी जो कि हमने इम्प्लीमेंट नहीं करी है, हम उसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, सो हियर इज़ द यूज़र इमेज लिंक। मैंने यहाँ पर सोर्स नहीं दिया तो मैं यहाँ से इस पिक्चर का सोर्स कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी इमेज लिंक एंड देन पेस्टेड हियर, ठीक है जी। इसी के साथ कोई भी रैंडमाइज वेबसाइट से इफ़ यू वांट टू कॉपी एनी मैसेज तो आप वहाँ से मैसेज भी गेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई सा भी मैसेज ले लेती हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू कॉपी हेयर। तो पहले मैं एक सैम्पल चेक करा देती हूँ व्हाट इट्स गोना लुक। So I just write it here, okay जी। So fine, मैं इसको ज़रा रन करा के चेक करूँ, then we can get the idea easily. It's look like that, ठीक है। सारा अहमद मार्केटिंग एंड इसके पिक्चर आ गई। इस तरीके से लाइन आप प्रोग्रेस बार हमने लिया था, जैसे प्रोग्रेस बार फुलफिल होगा दैन इट्स वर्किंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो अगेन जावास्क्रिप्ट पर आते हैं एंड देन यहाँ पर हमने एक ले लिया। अब गाइस मल्टीपल टाइम आप इसी कंटेंट को कॉपी करें, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करें एंड देन इस कॉमा के बाद जितनी दफ़ा आपने मैसेजेस को रन कराना है उतनी दफ़ा आप पेस्ट कर दें। फ़िलहाल वी आर गोइंग टू टेक इट हेयर द 3 एज वेल। सो पिक्चर भी हम इंटरनेट से कॉपी कर लेते हैं। सो आई जस्ट चेंज हेयर द नेम, so another name, same like that. If you want to change the pictures then you can easily change it here. ओके, अब इसको हम फर्दर मोर आगे कंटिन्यू करते हैं। इसकी मतलब ये था गाइस कहने का कि इफ़ यू वांट टू राइट मोर देन दैट तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। हम इसको रन कराते हैं। तो वी आर गोइंग टू आउट फ्रॉम दिस bracket. Now we are going to implement here the let idx equals to 1। जैसे ही 1 पे फंक्शनिंग करेगा, फंक्शन अपडेट टेस्टिमोनियल, एक फंक्शन बनाएंगे। सो कंस्ट्रक्ट sorry, here is first one is the name, position, photo, then text, ठीक है।
So you all are equals to testimonial IDs. Okay, move on the next. So here is the testimonial dot inner tags. Inner HTML equals to tags. So after that, use here the tab for the line sequence. इसी के साथ साथ यूज़र इमेज डॉट src सोर्स जो गेट करेगा वो फोटो से ले लेगा. इसी के साथ साथ यूज़र नेम डॉट inner HTML equals to name से get कर लेगा. And after that role again dot inner HTML equals to position से. ठीक है, move on the next. IDX इंक्रीमेंट करेगा, मतलब ID बढ़ती जाएगी अगर लिमिट हियर द कंडीशन IDs जो है ग्रेटर देन टेस्टिमोनियल्स लेंथ -1. So here is the IDX equals to 0. After that you can call it here set interval update testimonial comma, here is the interval length, here is the 10,000. Okay, so guys हम इसको रन कराते हैं and see the result. So now guys इसको रन कराते हैं then we are going to share the final result with you. So हमारा यहाँ तक हमने पिक्चर्स गेट कर लिए इंटरनेट से रैंडमली, आप भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. तो हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट, इट्स लुक लाइक दैट. आपका देख सकते हैं स्लाइडर जो है वो इस तरीके से रन हो रहा है. So जैसे प्रोग्रेस बार वन टाइम क्लोज होगी देन इट्स गोइंग टू स्विच अनदर मैसेज. सो इसी के साथ साथ यू कैन सी द थर्ड मैसेज हियर. Here is the third message. So I hope guys आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा. So लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, गुड कमेंट पास करते रहें. वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइट ट्यूटोरियल के साथ. जब तक अल्लाह हाफ़िज़.